morning, lovely students. I hope you all are safe and robust at your homes. So, students, in our last classes, we were discussing about the story of a very sweet girl whose name is Umana, and she is sharing her experience of train journey from Gujarat to Kerala. And during her train journey from Gujarat to Kerala, she will cross many states like from Gujarat, she will move to Maharashtra, then Goa, then Karnataka, and then Kerala. So students, as we all know, India is a country with diversity. It has 29 states and 8 union territories. And each and every state is famous for its unique flavor, unique food, unique culture, dresses, dance forms, language, and lots of festivals are also celebrated in different states. So, in all, we can say that in India, we can proudly see the unity in diversity. We enjoy all the festival of all religions. We enjoy all the festival of all state. We love all the dresses of all state and we love food of all state. Right? आप सभी को भी खाना पीना बहुत पसंद है ना? जब भी आपकी मम्मी टेस्टी फूड आपके लिए बनाती है, सो आप उस दिन का वेट करते हैं. कई बार आप अपनी मदर फादर से रिक्वेस्ट भी करते हैं that you want to eat that thing, right? And we have already seen in our yesterday class that Umana mother has packed very tasty and delicious food for their train journey. And what they have packed? They have packed dhokla, lemon rice and sweets. So, आप भी कभी ट्रेन जर्नी पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे कहीं जाते हैं, so your mother also prepare very tasty and delicious and special food that you like for you all, right? So as we all know that Omana is from Gujarat, so her mother prepared dhokla, lemon rice and sweet, that is a famous food of Gujarat. So in today's class we will discuss about famous food item of different states. So let's start with the head of our country. So at the head of our country there is Jammu and Kashmir, and it is the most beautiful state, and there people eat dum aloo and rogan josh. So dum aloo is made from potatoes. A spicy curry is made using small potato, and rogan josh is aromatic flavored dish made of meat. So people of Jammu Kashmir enjoy dum aloo and rogan josh the most. So let's move forward and let's talk about another beautiful state full of mountains, that is Himachal Pradesh. And in Himachal Pradesh people like to have dham and bhe. Students, what is dham? Dham is a dish made of pulses. It is a very delicious dish that is cooked on slow flame, and bhe basically means lotus stem. So the dish made by spicy and fried lotus stem is known as bhe. So the people of Himachal Pradesh enjoy dham and bhe the most. It is their favorite dish. So now let's move to one more another state, Uttarakhand, that is also called Queen of Mountains. So the people of Uttarakhand love to eat kafuli. What is kafuli? Kafuli
is a curry made of green leafy vegetables. So people of Uttarakhand make curry using spinach leaves, and they love to have this spinach leaf with a special kind of chapatis that is made of different kind of grain. Okay, so now let's move forward to the Punjab. The people of Punjab love to eat sarson ka saag or makke ki roti in winter season, and their all-time favorite dish is chole bhature, and I hope you all also love to have chole bhature, right? Yes, I love to have chole bhature a lot. So now let's move forward and look at this royal state Rajasthan. Students, we all know that Rajasthan is known for its royalty. वहाँ के राजा महाराजा की शान ही अलग होती है. So Rajasthan is famous for his royalty, and people there love to have royal food, that is dal bati. Student, what is bati? Bati is made of wheat. ये गेहूं की बनी होती है, dipped in देसी घी. So गेहूं की बनी गोलियों को पकाया जाता है और उसे घी में डुबाकर दाल के साथ खाया जाता है. So people love to have this dal bati in Rajasthan. So students, now let's move to the next state, that is Gujarat. As we have also discussed, in Gujarat, people love to have snacks made from gram flour. So, गुजरात के लोगों को चने के आटे यानी बेसन से बने हुए स्नैक्स बहुत पसंद आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ढोकला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड खमन इन गुजराती, खांडवी, फाफड़ा, थेपला, etc. And most of the things are made from gram flour, that means besan. So people like to have snacks like dhokla, khandvi, fafda, thepla in Gujarat, and mostly things are made up of gram flour. So students, now let's move forward to the Maharashtra. In Maharashtra, people love to have Puran Poli. What is Puran Poli? Puran Poli is a type of stuffed paratha in which stuffing is made from dal and jaggery, and I have tasted it. It is a very tasty paratha. So आप सभी ने घर में आलू के पराठे, पनीर के पराठे, प्याज के पराठे खाए होंगे. So आप कभी अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करना, शी विल ऑल्सो मेक पूरन पोली फॉर यू. इसमें किस चीज़ की स्टफिंग की जाती है? इसमें दाल और जैगरी यानी गुड़ की स्टफिंग की जाती है. एंड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो लव टू हैव वड़ा पाव. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट स्टेट इज गोवा, एंड एज यू ऑल नो, गोवा इज अ कोस्टल स्टेट. ये एक समुद्री इलाका है. So mainly seafood is eaten there, like fish curry and rice. So the people of Goa love to have seafoods like prawns, fish curry, rice, etc. Now let's discuss about South India. So South India is famous for its idli, dosa, mendu vada and sambar. So because the production of rice and coconut is most in these southern part of India, that is why people of southern state like to have dosa, mendu vada, idli and sambar. So South India में बेटा जितने भी स्टेट्स हैं लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, all the state people love to have dosa, idli, mendu vada and sambar.
These are the common dishes of South India. आप जब भी कभी साउथ इंडिया जाएंगे आपको ये मेन फूड ज़रूर देखने को मिलेगा. सो अभी हम डिटेल में इन साउथ स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड लेट्स कम टू दी केरला. सो केरला की वन वेरी फेमस डिश इज पायसम. पायसम इज़ अ काइंड ऑफ डेजर्ट जिसे हम नॉर्थ इंडिया में खीर के नाम से भी जानते हैं. एंड इट इज़ मेड फ्रॉम राइस, ड्राई फ्रूट्स, जैगरी यानी कि गुड़ एंड मिल्क. एंड इट इज़ कुक्ड एट वेरी लो फ्लेम, सो इट इज़ अ वेरी टेस्टी डेजर्ट. नाउ let's move forward and look at Andhra Pradesh. So this is a very unique and special dish that is made in Andhra Pradesh, and the name of this dish is Puthare Kelu. So this dish is mainly made of rice flour, ghee and powdered sugar. इट्स टेस्ट इज़ यूनिक. इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही क्रंची होती है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है. सो इट इज़ अ वेरी टेस्टी फूड. सो आप कभी भी आंध्र प्रदेश विजिट करेंगे सो हैव दिस डिश. दिस इज़ अ वेरी टेस्टी डिश ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द नेम ऑफ डिश इज पुथारे कुलू. ओके, सो नाउ let's move forward and move toward Telangana. So, people of Telangana love to have Hyderabadi biryani. एंड इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा. अलग अलग स्टेट्स में भी इस बिरयानी को सेल किया जाता है एंड पीपल लव टू हैव दिस बिरयानी. लोग इसकी डिमांड करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी टेस्टी बिरयानी दैट इज मेनली मेड इन Hyderabad, Telangana. Right? So now let's move forward and let's talk about Odisha. So the famous dish of Odisha is Chhena Poda. Chhena is a dairy product that is made of milk. जब हम दूध को कंडेंस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पकाते हैं, तो उससे हमें छेना मिलता है. एंड पीपल ऑफ ओडिशा बिलीव that this dish is liked by Lord Jagannath. उड़ीसा के लोग ये विश्वास मानते हैं that ये छेना पोड़ा लॉर्ड जगन्नाथ को बहुत ज़्यादा पसंद थी. That is why छेना पोड़ा is most famous dish of Odisha. So whenever you will visit Odisha, please have this dish. Okay. So now let's come to our north state, Bihar. And Bihar is famous for its litti chokha. Litti is a kind of bati made of wheat dipped in ghee. जैसा हमने राजस्थान में भी बाटी के बारे में डिस्कस किया था. And chokha is a very spicy curry made up of brinjal and sometimes potatoes also. Right? So it is a very famous dish of Bihar. So people of Bihar love to have litti chokha. Now let's come to the sweetest state, that is West Bengal. So अभी हम वेस्ट बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल like to have sweet dishes most, like Rasgulla, Sandesh, and they usually like to have माछ भात. सो यहाँ के लोगों को, जैसे यहाँ के लोग बहुत ही स्वीट होते हैं, सो दे ऑल्सो लाइक स्वीट डिशेज द मोस्ट. इसीलिए उन्हें रसगुल्ला, संदेश और डिफरेंट स्वीट्स ज़्यादा पसंद होती है. एंड दे लव टू हैव दीज स्वीट्स. दे ऑल्सो लव टू हैव मिष्टी दोई. आप सभी ने ज़रूर खाई होगी. यस. एंड द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल मेनली लव टू हैव माछ भात, और यू कैन से फिश एंड राइस. सो अभी हमने बहुत सारे स्टेट के बारे में डिस्कस किया. एंड वी हैव सीन दैट सीरियसली इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्सिटी. इट हैज़ very unique taste, unique food. Each state has unique food. Each state has unique food and each food is having unique taste. So I
आई होप आपने सभी डिशेस के बारे में एंजॉय किया होगा और आपके मुंह में ज़रूर पानी आया होगा। सो आज आप सभी लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स से अपनी फेवरेट डिश बनवाइए और एंजॉय कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। फर्दर द स्टोरी ऑफ अमाना we will discuss in next class. So आपका आज का होमवर्क है, you have to list down different state of India along with their favorite food and you can draw or paste their picture also. So I hope you enjoyed today's class. Thank you. Have a nice day.